Shabads 26 and 28, Saint Mangat Ram Ji's Vani or Divine Revelation in English. Introduction. This writer has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ram Ji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. Shabad 26. Line 1. साचा शब्द निरंतर ध्याओ, साचा शब्द निरंतर ध्याओ, परम पुरख को शीस नवाओ, परम पुरख को शीस निवाओ. The writer must meditate on Shabad, the word, constantly. He must bow to God, the Supreme Consciousness. Comment. He must surrender entirely to Maharaji. Line 2. सब कुछ तिस की कृपा जान, सब कुछ तिस की कृपा जान, दुख सुख देखें जो परमान, दुख सुख देखें जो परमान. He must accept God's will in happiness or misery. Comment. Both pleasure and pain are God's grace. Line 3. दृढ़ निश्चय से राखो एट, दृढ़ निश्चय से राखो ओट, कर्म वासना त्यागो खोट, कर्म वासना त्यागो खोट. He must steadfastly have God alone as his refuge. He must remove the desire for the outcome of his actions. Line 4. जो भावे त्यों चक्र चलाई, जो भावे त्यों चक्र चलाई, समरथ पुरुष सब खेल खिलाई, समरथ पुरुष सब खेल खिलाई. Everything happens in the will of God. The omnipotent Lord plays the game of life. Line 5. द्वंद्व विकार से छूटन पाओ, द्वंद्व विकार से छूटन पाओ, आज्ञा बूझ शब्द तत् ध्याओ, आज्ञा बूझ शब्द तत् ध्याओ. He must be freed from dualities. He must accept God's will and meditate on Shabad, the word. Line 6. निराधार जीवन को धार, निराधार जीवन को धार, केवल प्रभु का राख आधार, केवल प्रभु का राख आधार. The writer must not place any hope in the word. God should be his only anchor. Comment. He came to Maharaji's doorstep with a broken heart. Saint Mangat Ram Ji is his only hope now. Line 7. करने हारा सोही स्वामी, करने हारा सोही स्वामी, अंतर बाहर रहे विश्रामी, अंतर बाहर रहे विश्रामी. God does everything, but he remains peaceful in all the activity. Line 8.
घट घट की सब जाननहारा, घट घट की सब जाननहारा, दृढ़ निश्चय से जप करतारा, दृढ़ निश्चय से जप करतारा. The author must meditate steadfastly on the omniscient God. Comment: there are many instances of Maharaji's omniscience during his life history. Line 9. साचा ने हो राखो प्रभ चरना, साचा ने हो राखो प्रभ चरना, पलकल पलक पाओ तिस सरना, पलक पलक पाओ तिस सरना. The writer must have fervent love for God and seek the Lord's refuge every moment. Comment: the author must surrender and sign his powers of attorney to Maharaji. Line 10. सब कुछ हुआ तिस आधार, सब कुछ हुआ तिस आधार, मन से त्यागो हंग विकार, मन से त्यागो हंग विकार. The author must remove his egotism because everything happens in the Almighty's will. Comment: the author is a lump of clay in the hands of the master potter Maharaji. Line 11. दीन गरीबी श्रद्धा पाओ, दीन गरीबी श्रद्धा पाओ, पूरन प्रभ को शीस निवाओ, पूरन प्रभ को शीस निवाओ. He must have humility and faith and surrenders to the perfect Creator. Line 12. ठाकर साचा नित रखिया करी, ठाकर साचा नित रखिया करी, सत विश्वास जो अंतर धरी, सत विश्वास जो अंतर धरी. The writer should have complete faith that the Lord would protect him in every way. Comment: just as a 4-year-old child relies entirely on his mother, the writer should trust Maharaji completely. Line 13. मन का डोलन दृढ़ कर राख, मन का डोलन दृढ़ कर राख, छिन छिन नाम की रसना चाक, छिन छिन नाम की रसना चाक. He must savor the name. He must savor the name every moment and restrain his undisciplined mind. Comment: his mind is more powerful than a wild elephant. The Maha Mantra would control his mind. Line 14. तृष्णा रोग जाए सब ताप, तृष्णा रोग जाए सब ताप, अंतर्गत पाए प्रभ का जाप, अंतर्गत पाए प्रभ का जाप. When he meditates on the name, his suffering caused by his desires would be cured. Line 15. गुप्त स्वरूप घर प्रगट होई, गुप्त स्वरूप घर प्रगट होई, सर्ब आनंद तत्सार परोई, सर्ब आनंद तत्सार परोई. The hidden Lord would manifest himself in the writer's body and shower him with bliss. Line 16.
धन साजन जिन पाई कल्याणा, धन साजन जिन पाई कल्याणा, नाम आधार जग सार पहचाना, नाम आधार जग सार पहचाना. A person who redeems himself is blessed. He understands that the name supports the whole universe. Comment. Just as a thread upholds the beads of a necklace, the word props the entire universe. Line 17. सार पहचान मन लीन समाई, सार पहचान मन लीन समाई, कर्म वासना खेत सब जाई, कर्म वासना खेत सब जाई. The mind is absorbed into the name after the realization of the truth. Suffering caused by the desire in the actions dissipates. Line 18. तत् पहचान के भयो निहाल, तत् पहचान के भयो निहाल, पद पर सा प्रभु दीन दयाल, पद पर सा प्रभु दीन दयाल. A person reaches God after comprehending the truth and attains ecstasy. Line 19. परम आनंद उस साजन पाया, परम आनंद उस साजन पाया, प्रभु अपना जिस होए ध्याया, प्रभु अपना जिस होए ध्याया. He reaches the highest bliss after contemplating God. Comment. Maharaji realized God and was in constant bliss. Line 20. साची भक्ति प्रभु चरण की, जब मन आन समाई, मंगत दुविधा सब मिटी, जीव परम सुख पाई. साची भक्ति प्रभु चरण की, जब मन आन समाई, मंगत दुविधा सब मिटी, जीव परम सुख पाई. With the grace of the Guru, the author might have true devotion. Saint Mangat Ram Ji says that all the writer's dilemmas would be removed and he would attain supreme bliss. Shabad 28, line 1. नित ही नाम प्रभु का गाए, नित ही नाम प्रभु का गाए, साची भक्ति सार कमाए, साची भक्ति सार कमाए. The writer must always meditate on God's name. He must earn the real wealth of devotion. Comment. The actual treasure of spirituality accompanies him after his death. Line 2. So he Gurmukh tat ke vadi, so he Gurmukh tat ke vadi, नाम सिमर के हरि व्याधि, नाम सिमर के हरि व्याधि. Only he is the real follower of the Guru who has cured his disease by contemplating the name. Comment. A person who has healed his malady
by reflecting on the Mahamantra is a faithful follower of Maharaji. Line 3. निर्मल रंग में सुरत रंगाई, निर्मल रंग में सुरत रंगाई, प्रेम का चोला अंतर पाई, प्रेम का चोला अंतर पाई. The writer must dye himself in the fervent love of God and wear the inner cloth of affection for God. Comment. Maharaji will color him in the passion for God. Line 4. मनमुख भरम की दूष नटारी, मनमुख भरम की दूष नटारी, साची औखद प्रभ नाम विचारी, साची औखद प्रभ नाम विचारी. He will remove dirt of his undisciplined mind and take the medicine of God's name. Comment. The Mahamantra restrains his mind's lust, anger, greed, attachment and egotism. Line 5. प्रण अपने में पूरन होए, प्रण अपने में पूरन होए, एक चित प्रीत प्रभ नाम परोए, एक चित प्रीत प्रभ नाम परोए. The author must strive his utmost in his resolve to meditate. Line 6. जग आवन तिन पाई सार, जग आवन तिन पाई सार, अपने आप का कियो सुधार, अपने आप का कियो सुधार. He would lead a blessed life by redeeming himself. Comment. Maharaji sanctifies countless people. Line 7. ज्ञान सुगंधी परगट भई, ज्ञान सुगंधी परगट भई, अनक जीव ने सतमत लई, अनक जीव ने सतमत लई. He would emit the fragrance of wisdom and help innumerable persons. Line 8. अंतर चेत अधिक विश्वासा, अंतर चेत अधिक विश्वासा, साचे नाम की अधिक प्यासा, साचे नाम की अधिक प्यासा. The writer would have complete faith of God and have thirst to chant the name. Line 9. जीवन पायो प्रभ आधार, जीवन पायो प्रभ आधार, साची भक्ति करी विचार, साची भक्ति करी विचार. He would have genuine affection for God and he would become, and God would become the center of his life. Line 10. नित नित चरनी करी दंडौत, नित नित चरनी करी दंडौत, प्रभुदाते की पाई ओट, प्रभुदाते की पाई ओट. He would surrender to the Father and the Lord would be his only refuge. Line 11. भय भरम चित खेद निवारी,
भय भरम चित खेद निवारी, सत ठाकर का भयो पुजारी, सत ठाकर का भयो पुजारी. The writer's pain due to fear and delusion would dispel, and he would become devotee of the true master. Line 12. निर्मल कीरत जग में पाई, निर्मल कीरत जग में पाई, कल्याण स्वरूप सत शब्द ध्याई, कल्याण स्वरूप सत शब्द ध्याई. He would sing glory of the Lord and would contemplate the redeeming word. Line 13. साची रास पाई अनमोल, साची रास पाई अनमोल, नाम प्रभु पाया हृदय तोल, नाम प्रभु पाया हृदय तोल. The author would find priceless wealth of the name of God. Comment. He would discover that Mahamantra is an invaluable diamond. Line 14. अपने मन में पाई प्रसन्नता, अपने मन में पाई प्रसन्नता, नित नित नाम जपूं भगवंता, नित नित नाम जपूं भगवंता. He would meditate on the name to enjoy the true bliss within. Line 15. आदेश करूं प्रभु अंतर्यामी, आदेश करूं प्रभु अंतर्यामी, विपत त्याग पाऊं विश्रामी, विपत त्याग पाऊं विश्रामी. He bows to the omniscient Lord and enjoys peace instead of facing a calamity. Comment. Maharaji would remove his calamity of negativity, anger, resentment, worry and fear. Line 16. दीन दयाल सहायक भय, दीन दयाल सहायक भय, अपने जन को चरनी लय, अपने जन को चरनी लय. The merciful God would become his helper and would shelter him. Comment. Maharaji would help him in every way. Line 17. उस्तत करूं प्रेम रस खाऊं, उस्तत करूं प्रेम रस खाऊं, दुविधा त्याग निर्भय समाऊं, दुविधा त्याग निर्भय दुविधा त्याग निर्भय समाऊं. The writer would worship and enjoy nectar of God's love. God would remove his dilemmas and make him fearless. Comment. He always has dilemmas about his actions. He always wants a gain and avoids any loss. Line 18. ये ही धाम परम पद मीत, ये ही धाम परम पद मीत, जो नाम प्रभु का आवे चीत, जो नाम प्रभु का आवे चीत. If his mind likes the name, it would be the highest accomplishment of his life. Line 19. सुकृत मूरत चरण बलिहारी, सुकृत मूरत चरण बलिहारी,
प्रभुदाते की जिस कथा विचारी, प्रभुदाते की जिस कथा विचारी. It's a blessing to see a devotee of God, and the writer must bow to him. Line 20. जिसने हर जस खाया, परम पुरुष सोही देव. मंगत दुविधा सब मिटे, जब पाइए चरण की सेव. जिसने हर जस गाया, परम पुरुष सोही देव. मंगत दुविधा सब मिटे, जब पाइए चरण की सेव. A person who sings praise of God is a supreme being and a God. Saint Mangat Ram Ji says that all the writer's doubts and dilemmas will dispel if he serves the Lord. This concludes Shabad 28.